Yes. Good evening, everybody. I was discussing with you admission of a partner chapter. This is according to Telangana State Accounting Intermediate Second Year syllabus. Very quickly, we will revise whatever we studied in our last class. What I told you, admission of a partner means it is the case where existing partners, when they need more amount of capital, they will admit the new partner into partnership business. So this is the case called admission of a partner. Now in case of admission of a partner, what accounts we have to prepare? As I told you that this question is important for 20 marks. So very carefully you have to prepare all the accounts and very easily you can get 20 marks. So what are the accounts you have to prepare for 20 marks? First of all, revaluation account. What I told you, in case of admission of a new partner, reassessment of assets and liabilities will take place, and that effect we should give in revaluation account. Then second one, goodwill account. In every problem of partnership, there will be an accounting treatment for goodwill. There will be a goodwill adjustment, because whenever the new partner is coming into business, he has to bring with him goodwill along with capital. Then next one, cash or bank account, then partner's capital account, and then finally balance sheet. So these are the 5 accounts and statements which we have to prepare for the purpose of admission of a partner problem. Right then. Then I discussed with you the accounting treatment of goodwill. What I told you, in case of admission of a partner, there are 3 cases of goodwill. Case number 1, when the goodwill is brought into cash. When the goodwill is brought in cash by the incoming partner. Suppose the goodwill is brought in cash by the incoming partner. What we have to do, sir? We have to pass simultaneously 2 entries. First of all, cash to goodwill, then second entry, goodwill to old partners. These 2 entries should be in which ratio? Sacrificing ratio. Okay. Then, suppose if the goodwill is raised, valued or created, means it is not brought in cash by the incoming partner, we are raising the goodwill in the books. Now what is the accounting treatment here? We have to pass only 1 entry, sir. What is that one? Goodwill account AR to old partners capital account. In which ratio? Old ratio only. We use sacrificing ratio only in the case of first case. And what do you mean by sacrificing ratio? Simply, sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Sacrificing ratio we calculate for which partners? Only old partners. New partner cannot be sacrificing anything. He will not sacrifice anything because he just now entered into partnership business. So in the case number 1, when the goodwill is brought into cash, we have to pass the 2 entries in sacrificing ratio. Once again I am telling you, in the main exam for 20 marks, he will not ask you to pass the entries. He will ask you to prepare the ledger accounts and balance sheet. We are passing entries to get the clarity on the concept of goodwill only. Then case number 3 is when goodwill is paid privately. When goodwill is paid privately, there is no accounting treatment for it. Simply you assume that goodwill is not given in the books. So what I am telling you, basically there are 2 steps of goodwill accounting treatment in case of admission of a partner. First one, when the goodwill is brought in cash. Second one, when the goodwill is raised, valued or created. Okay now? Right then. Now, having understood the concept of goodwill, now we'll solve a small problem for 2 marks. Almost in every year in TS Intermediate Second Year Accounting, this question will come for 2 marks. A small problem it is from admission of a partner problem, from admission of a partner chapter. Okay, I'll be writing a question on the board. It is like an illustration, example sum only. For example, A and B are partners sharing profits and losses in ratio 3:2. They admitted C as a new partner for 1/3 share. Calculate new profit sharing ratio. This is the question. Usually, definitely you will get one question for 2 marks, and the question will be like this only in case of admission of a partner. See, who are the old partners? A and B. What was their profit and loss sharing ratio? 3:2.
they admitted Mr. C as a new partner, and how much share they are agreeing to pay him? 1/3. तो पुराने पार्टनर्स कौन थे? ओल्ड पार्टनर्स ए और बी. न्यू पार्टनर कौन है? सी. उसको कितना शेयर देना है? 1/3 शेयर. Okay na? Now what he is asking you, calculate the new profit sharing ratio. Now how many partners are there? Before the admission of partner C, only 2 partners were there, A and B. What was the ratio between them? 3:2. Now after the admission of a new partner, Mr. C, how many partners are there? 3 partners are there. So ratio should be a new ratio. The question is, how do you calculate the new ratio? अभी नया ratio मालूम कैसा करते सर? How do you calculate the value of new profit sharing ratio? That I am telling you. अच्छा, one more important thing, 3:2 is given there. Who are the partners? A and B are the partners. So how will you share the profit between them? 3:2 मतलब उसको divide कैसा करना सर? See, 3:2 मतलब, see listen here, A, B, 2 partners are there. What is their PS ratio, profit loss sharing ratio? 3:2. 3:2 मतलब A को कितना मिलेगा? 3/5. How much B will get? 2/5. सर 3 we understood, 2 we understood. What is by 5 सर? इन दोनों को ऐड करो कितना आता? 3 + 2 is equal to how much? 5 only. So 3/5 A will get, B will get 2/5. So what we have to understand is 3:2 the ratio between A and B. It means अगर उसको अपन सेपरेट करें, 3:2 एक रेशियो फॉर्म में है मैथमेटिकल, अगर उसको अपन शेयर उसका अलग अलग करें तो कितना आता सर? 3/5, 2/5. सर ये by 5 कैसा आ रहा? 3 + 2 you add, how much it is? 5. So there also denominator 5, here also denominator 5. Now how do you solve this problem? This problem is important for 2 marks. Once again I am telling you, this question is important for 2 marks. In every final exam, intermediate second year of TS, he will definitely ask you this question for 2 marks. Calculating the new profit sharing ratio. How do you write the answer? Listen, answer, calculation of new profit sharing ratio. See, answer, even though it's a small answer, but presentation is important. Okay, you have to present the answer in a very easy and understandable manner. See, A and B are old partners with 3:2 ratio. Okay, then C is admitted for 1/3 share. So this is the information given in the question. Now what we have to do? Very simple sir. First of all we have to calculate remaining ratio. What we have to calculate sir? First of all remaining ratio. ये कैसा निकालते सर? It is like a formula, you remember, 1 minus the share of new partner. नया पार्टनर कौन है? C. उसको कितना शेयर दे रहे अपन? 1/3. In every problem you have to do in this way only. 1 minus the share of new partner. 1 minus 1/3 is how much sir? See here nothing is there, you can write 1. 1 के नीचे डिवाइड में कुछ भी देना तो 1 लेते हैं उसके ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 1s are 3 minus 1 1s are 1 divided by 3. 3 minus 1 how much? 2/3. That is the remaining ratio. Now very easily you can calculate new ratio. What is the formula of new ratio? New ratio is equal to old ratio into remaining ratio. Right. Who are the partners here? A, B, C. What is the formula here? Old ratio into remaining ratio. A का old ratio कितना है सर? What is the old ratio of A? 3/5. Into what is the remaining ratio? वहाँ पर करें ना अपन 2/3. Then again B का old ratio कितना है सर? 2/5. Into B का remaining ratio. Remaining ratio कितना है? 2/3. Now for C you should not take old ratio because C just now we appointed. New ratio only we have to take. कितना new ratio है इसका? 1/3. Okay. Now see, you can cancel this now. 3 3 and okay, don't cancel it because there will be problem again. So write it as it is only. 3 3 2s are 6 6 5 3s are 15, 2 2s are 4, 5 3s are 15. You see denominator here 15 and here also 15. तो इधर भी क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर 15 होना चाहिए. How to make 3 as 15? Multiply and divide with 5. 5 divided by 5.
ओके सी यहाँ पर डिनोमिनेटर 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 15, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट वन रेशियो। तो रेशियो में इक्वालिटी होना डिनोमिनेटर में, तो ये 3 को 15 कैसा करते हैं सर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 5 बाई 5, सो इट विल बी 5 डिवाइडेड बाई 15। नाउ व्हाट इज द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू सी 6, ए का कितना है 6/15, बी का कितना है 4/15, सी का कितना है 5/15, सो वी कैन राइट लाइक दिस 6:4:5. This is the new ratio among all the partners A, B and C. Now if you separate this, अगर उसको segregate करें तो A का रेशियो कितना आता, 6 divided by, you add all this, 6 plus 4 plus 5 how much 15, तो 6/15 is the ratio of A, share of A. B का शेयर कितना आता सर 4/15, C का कितना आता सर 5/15. रेशियो को जब आप सेग्रीगेट करते हैं तो डिनोमिनेटर शुड बी सेम, 6/15, 4/15, 5/15. So this is the calculation of new profit sharing ratio. You will get in the final exam one question, compulsory question for 2 marks from this area only. He will ask you to calculate new ratio in case of admission of a partner. You will get a problematic question, okay na? So quickly take the picture of this or you can copy this. Please hurry up. So I believe every one of you have taken a snap of this one or a picture of this one. We'll continue with this particular chapter only. So what I told you, in case of admission of a partner, 5 things we have to prepare: revaluation account, goodwill account, cash or bank account, partner's capital account, then balance sheet. And what I told you about goodwill treatment, there are specifically 2 cases for goodwill in the case of admission of a partner. When the goodwill is brought into cash, simultaneously pass the 2 entries, cash to goodwill, goodwill to all partners. Both these entry we should pass in which ratio? Sacrificing ratio. Then suppose if the new partner is not bringing goodwill in cash, if the goodwill is raised, valued or created, then in this case only one entry we have to pass. What is that one? Goodwill to all partners. In which ratio? All ratio. That's it. You remember that only. This is important for 20 marks. Now this is the answer for 2 marks. He was asking you new profit sharing ratio. This is the way. So he may give you any type of problem. Means he can only change you the values, but the model of the problem will remain same. 2 partners will be there with ratio, and new partner will be admitted, some new ratio will be given, and he will be asking us to calculate the value of new profit sharing ratio. These are the steps required for that particular sum. So this question is important for 2 marks. Okay, then next one. Right then. Now it is the time to start all 20 marks problems. I will be solving on the board only the few questions which are highly important, which are likely to come in the main exam. Okay, so admission of a partner problem, intermediate second year, Telugu Academy, textbook accounting. Okay, question number 1. See, what is that question? I'll tell you. Right then, everybody come to page number 238. Page number 238, question number 1. Page number. This is from TS Intermediate Second Year Accounting textbook. Page number 238, question number 1. I am solving all 20 marks problems, so listen carefully. We have to read out the problem and mark the adjustments. Okay, listen. The following was the balance sheet of Ram and Rahim, who were sharing profits and losses in the ratio 2:3. So 2 partners are there, Ram and Rahim. What is their profit and loss sharing ratio? 2:3. So if you segregate this, अगर उसको अलग अलग करें तो राम का शेयर कितना होता 2/5, रहीम का शेयर कितना होता 3/5. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. Complete balance sheet is given, but don't see the balance sheet. First see the
items given below the balance sheet. You see there, on 1st April 2019, they agreed to admit Mr. Peter as a new partner for 1/5 share in the profits on the following terms. On 1st April 2019, we are appointing a new partner. पहले से पार्टनर कौन कौन थे? राम एंड रहीम. अभी किसको अपॉइंट करें? मिस्टर पीटर को. मिस्टर पीटर क्या है? न्यू पार्टनर है. ओके ना. तो न्यू पार्टनर whenever he enters into partnership, he has to bring with him two things. जब भी एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर होता, उसको अपने साथ दो चीज़ लाना पड़ता. सबसे पहले कैपिटल, दूसरा गुडविल. यू सी देयर, पीटर शुड ब्रिंग 40,000 फॉर कैपिटल. ही इज ब्रिंगिंग कैपिटल 40,000 एंड 20,000 फॉर गुडविल इन कैश. 20,000 इज ब्राउट फॉर गुडविल इन कैश. देखो यहाँ पर यू हैव टू आइडेंटिफाई द केस. गुडविल के अपने पास दो केसेस है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में. पहला केस क्या था? व्हेन द गुडविल इज ब्राउट इन कैश. दूसरा केस क्या था? व्हेन द गुडविल इज रेज्ड, वैल्यूड और क्रिएटेड. अभी ये कौन सा वाला केस है? ये फर्स्ट वाला केस है सर. कैसा मालूम? इट इज गिवन ना 20,000 फॉर गुडविल इन कैश. नया पार्टनर जो भी इंटर हो रहा पार्टनरशिप में, उन्होंने क्या कर रहा, नया गुडविल कितना लेके आ रहा है? वो कैश में लेके आ रहा हूँ. गुडविल इज ब्राउट इन कैश बाय द इनकमिंग पार्टनर. तो व्हेन द गुडविल इज ब्राउट इन कैश, व्हाट वी हैव टू डू? साइमल्टेनियसली वी हैव टू पास टू एंट्रीज. पहली एंट्री क्या पास करते हैं? कैश टू गुडविल. देन सेकंड एंट्री गुडविल टू ऑल पार्टनर्स. आई ऑलरेडी गिव दिस इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट इन माय फर्स्ट लेक्चर. ओके, यू हैव टू रेफर टू दैट. ओके ना. देन अब करना क्या है सर? रिमेनिंग ऑल एडजस्टमेंट्स यू रीड एंड मार्क द करस्पॉन्डिंग आइटम्स. सी देयर, डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, सो मार्क ऑन फर्नीचर विथ पेंसिल. एंड स्टॉक बाय 10%, मार्क ऑन स्टॉक विथ पेंसिल. अप्रिशिएट बिल्डिंग वैल्यू बाई 15%, मार्क ऑन बिल्डिंग विथ पेंसिल. तो करना क्या है सर? पूरे एडजस्टमेंट्स को पढ़ के वो कौन से आइटम को अफेक्ट कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग आइटम को बैलेंस शीट में पेंसिल से मार्क कर लेना. देन नेक्स्ट आइटम, व्हाट इज गिवन देयर? प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटार्स. दिस एडजस्टमेंट इज ऑन डेटार्स. तो डेटार्स के ऊपर मार्क करो. क्या क्या मार्क करें आप? यू हैव मार्क्ड ऑन फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग्स एंड देन डेटार्स. ये चार आइटम्स के ऊपर मार्क कर लेना. ओके ना. ठीक है, राइट. हो गया प्रॉब्लम. गिव द नेसेसरी एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट. एज आई टोल्ड यू, ही विल नॉट आस्क यू एंट्रीज. मेन एग्जाम में 20 मार्क के सम के लिए एंट्रीज नहीं पूछता हूँ. लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यू रिमेंबर ओनली दोज 5 accounts and statements which I gave you in my first lecture. What I told you, whenever you admit a new partner, admission of a partner में क्या क्या बनाते सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. अच्छा, कैश बनाना या बैंक अकाउंट बनाना, इट प्योरली डिपेंड्स इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में देखो आप, बैलेंस शीट में एसेट साइड व्हाट इज गिवन? बैंक इज गिवन फर्स्ट आइटम. तो यू प्रिपेयर बैंक अकाउंट. सर अगर कैश दिया तो कैश बनाना है, अगर बैंक दिया तो बैंक बनाना है. कभी कभी ऐसा होता दो भी दे डालता. In the balance sheet asset side, he will give you both cash and also bank. In that case, what we have to do? We have to prepare bank account only. Because what is our assumption here? जितने भी transaction partnership में होते वो checks से होते. Okay, that is our assumption, and in that case we have to prepare bank. अभी यहाँ पर क्या दिया? बैलेंस शीट में बैंक दिया, तो you have to prepare only bank account. Right then. Now listen here, everybody. Heading should be, always remember, presentation is also equally important. Even if your answer is correct but presentation is not good, he will not give you full marks. So always the heading should be in the books of partnership firm. In the books of partnership firm. What we have to do, sir? First one क्या बनाना है अपने को? Revaluation account. Left hand side top corner DR, right hand side top corner CR, means debit side and credit side. Particulars, amount, particulars. Now what is this account, sir? ये first account है, admission of a partner में बनाते हैं अपन इसको. Now this revaluation account is same like profit and loss account. तुम लोग फर्स्ट ईयर में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो है ऑलरेडी, तो इट इज सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लिखते क्या सर? इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट व्हाट वी हैव टू राइट? लिसन, आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट ट्रिक. इफ एसेट वैल्यू इंक्रीजेस और इफ लायबिलिटी वैल्यू डिक्रीजेस, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट.
ओके अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही या फिर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही तो करना क्या है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। वी हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। उल्टा हुआ, फॉर एग्जांपल इफ एसेट वैल्यू इज डिक्रीजिंग एंड लायबिलिटी वैल्यू इज इंक्रीजिंग, then what we have to do sir, we have to debit this to revaluation account. Simple rule of preparing revaluation account: if asset is increasing, credit side of revaluation account; if asset is decreasing, debit side of revaluation account; if liability is decreasing, credit side of revaluation account; if liability is increasing, debit side of revaluation account. अगर समझने में दिक्कत हो रही, डिफिकल्टी है, तो आप इसको कैसा समझना, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज सेम लाइक यूर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं वो यहाँ पर भी डेबिट साइड लिखना है, जो भी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं वो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड लिखना है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते क्या सर, इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी अपन एडमिशन कर रहे हैं ना, तो न्यू पार्टनर कौन है, पीटर। पीटर को अपॉइंट करते समय फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या चेंजेस हुए, ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज वॉट एवर द चेंजेस आर देयर, दैट वी हैव टू राइट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। यू सी द फर्स्ट चेंज, व्हाट इज सेड देयर, एडजस्टमेंट नंबर बी पढ़वा, फर्स्ट नहीं, ए वाला जो एडजस्टमेंट है उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, नो लायबिलिटीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सेकेंड एडजस्टमेंट से देखो आप, डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर को रिड्यूस करना है। डिप्रिशिएट मींस रिड्यूस, मींस फर्नीचर इज एन एसेट, एसेट की वैल्यू कम कर रहे सर, तो क्या करना सर, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट यू हैव टू राइट हियर टू फर्नीचर, ओपन द ब्रैकेट हियर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है देखो बैलेंस शीट में, 25,000। इन द 25,000 व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, 5%। 25,000 into 5 by 100, 0 0 0 0, it will multiply 1250. Okay, then next one, same line, same adjustment, depreciate furniture by 5%, stock by 10%। स्टॉक को भी डिक्रीज करना है, वो भी एसेट है, एसेट को डिक्रीज कर रहे हैं, तो फिर से कहाँ पर लिखना है सर, डेबिट साइड। कितना डिक्रीज कर रहे हैं सर, 10%। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 30,000, तो ओपन द ब्रैकेट हियर, 30,000 into 10 divided by 100, 0 0 0 0, it will be 3,000। अप्रिशिएट बिल्डिंग्स बाय 15%, बिल्डिंग्स को अप्रिशिएट करो बोल रहा हूँ, इंक्रीज करना है एसेट को, तो ऑन द क्रेडिट साइड हियर वी हैव टू राइट बाय बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स की वैल्यू है कितनी सर, 60,000, कितना अप्रिशिएट करना है, 15%, 0 0 0 0, 600 into 15, it will be 9,000. Then last adjustment, adjustment number D, provide for bad debts at 5% on debtors। ये एडजस्टमेंट डेटार्स के ऊपर है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलते हैं इसको। इससे होता क्या, डेटार्स की वैल्यू कम हो जाती, डेटार्स क्या एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो रही, तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू राइट टू PBD, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाउ डू यू राइट इट सर, वेरी सिंपल, डेटार्स की वैल्यू है कितने की देखो आप, डेटार्स वैल्यू है 40,000 और प्रोविजन कितना बनाना है, 5%, सो 40,000 into 5 divided by 100, 0 0 0 0, it will be 2,000. Any other adjustment of assets and liabilities, nothing. जितने भी assets और liabilities में adjustments थे सब इसी में आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। asset increase हुआ क्रेडिट साइड, asset decrease हुआ डेबिट साइड, liability decrease हुई क्रेडिट साइड, liability increase हुई डेबिट साइड। ओके, now total this, see how much on the credit side, 9,000, 9,000 credit side. How much on the debit side sir, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6,250. Which side is bigger, credit side is bigger, so 9,000 here and here also 9,000। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा सर, कम किधर है, ऑन द डेबिट साइड। हाउ मच द डिफरेंस इज सर, 0 5, 9 minus 2 7 and 8 minus 6 is 2, 2750, where you are getting difference on the debit side, तो here you have to write 2750, ओके ना। तो डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा तो क्या होता, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ऑलवेज रिमेंबर, इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इफ द डिफरेंस इज ऑन डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड आया तो क्या करना, उसको रिवैल्यूएशन लॉस लेना। अच्छा, अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटते किसके बीच में, डिवाइड किसके बीच में करते हैं सर, ओनली ओल्ड पार्टनर्स। सी मतलब पीटर इज जस्ट नाउ अपॉइंटेड, so when he is appointed as a new partner, he will not get any share in the revaluation profit. Who will get the shares, only the old partners. So who are the old partners here, partner Ram and Rahim, with ratio, old ratio।
So how do you divide the revaluation profit? 2750 on the debit side you are getting difference. Okay na? So 2750 into 2 by 5, again 2750 into 3 by 5. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रॉफिट जो है वो किसको मिलता, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलता. विच रेशियो, ओल्ड रेशियो. कितना प्रॉफिट है 2750. अब इसको डिवाइड कैसा करना, 2 by 5, 3 by 5, कट इट. 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0. ओके, 5 5 जा 50, sorry. 550 into 2, it will be 1100. Okay, then here also same. 550 into 3, it will be 1650. Okay na? So if you divide this, you will get the answer. 1100 is Ram share and Rahim share is 1650. If you add this, you should get the same answer, that is 2750. So for 20 marks we have to prepare 5 things. उसमें से खाली अपन अब तक एक बना है. Revaluation account is over. Remaining goodwill account is there. Many accounts are there that we will complete in the next lecture. Okay na? So I'm winding up here only. So if you have any doubt, you please comment in the comment section. You ask me the doubts. If you like the video, please like it, share it with your friends, subscribe to this channel. Okay, so if there are any doubts, you please ask me in the comment section. Thank you very much.